banker Baron Vijay Mallya, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. Welcome on Figuring Out, sir. Why are you doing this after 9 years? In India, public opinion is very quickly formed and influenced by the media. Chor, पैसा लूट के भाग गया. क्या पैसा? क्या लूट? Hi, I'm Vijay Mallya. It's not just huge, it is humongous. Nothing else comes close. Kingfisher is a class apart. Vijay Mallya case. You were the biggest airline in the country. Welcome aboard Kingfisher Airlines. India's biggest airline. Going to be there amongst the best airlines in the world. What went wrong? So I went to Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India. I have to downsize this airline. I was told not to downsize Kingfisher at that time. You continue, banks will support you. That is how it all started. Kingfisher Airlines has been forced to suspend all of its flights. Kingfisher Airlines has been struggling. At the time when you asked loan, the company was not doing that great. Please never forget, I gave my personal guarantee. So all this narrative of chor kabhi apna personal guarantee deta hai kya? People give you this kind of loan against collateral. They took shares of Kingfisher Airlines at the double price. There's again a statement that your international employees were getting paid, Indian employees were not. The company in India had no money. It was UB's money of 260 crores with the bank under the control of the government of Karnataka. Court said no. I've also found you guilty for misrepresentation of funds. Do you ever feel sorry that you couldn't do anything? I apologize publicly to everyone for the failure of Kingfisher Airlines. Here's what pissed people off. That in your private life you were enjoying. You had a grand birthday party, your 60th birthday party. Do you think you shouldn't have done that party? Why? Somebody mentioned that you took out 35 million euros and invested in buying properties in France. Rubbish. What happened between 2012 and 2015? I made 4 settlement offers to the banks, which they refused to accept. 2015, CBI started investigating you. They found you siphoning the money. 3rd March 2016, case needs to be heard or needs to be represented in front of Supreme Court. 2nd March, you left the country. On 15th April, your suspension came for your passport, and 24th April was the revocation. Why didn't you reply? I'd like to show you something. Here is challenge of doing business in India government. It's in the Indian DNA. But how did you manage that before? Would there ever be exchange under the table as well? I'm not going to confirm or deny that because I leave it to your imagination. How do you make money now? Do you feel restricted now? What's your biggest fear now? And are you prepared for the worst? Have you ever imagined yourself actually going to jail? Would you be willing to return to country if you're assured fair trial? If I'm assured, absolutely, I will think about it seriously. But एक वक्त था जब विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था. प्राइवेट जेट्स, यॉच पार्टीज और दुनिया भर में छाया हुआ नाम. लेकिन आज वो एक फुजिटिव है, एक ऐसे इंसान जिसे लोग चोर कहकर पुकारते हैं. लेकिन क्या वो वाकई चोर है या फिर मीडिया ने सिर्फ एक कहानी बनाई जिसमें असली सच दबा दिया गया? विजय माल्या ने अब तक मीडिया से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन 9 साल बाद उन्होंने फाइनली अपनी कहानी रखी. विजय माल्या ने कहा, मैं इंडिया वापस आने के लिए तैयार हूँ. बस एक अश्योरेंस चाहिए कि मुझे फेयर ट्रायल मिलेगा, मुझे इज्जत से जीने दिया जाएगा. उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी पैसा चोरी नहीं किया. मुझे भगोड़ा कह लो, लेकिन चोरी कहाँ हुई? सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है. किंगफिशर एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन जो लग्जरियस सर्विस के लिए जानी जाती थी, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस ने इस एयरलाइन को डुबा दिया और विजय माल्या के ऊपर 9,000 करोड़ के लोन डिफ़ॉल्ट का इल्ज़ाम लगा. माल्या ने कहा, मैं मानता हूं कि एयरलाइन फेल हुई, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन मैंने 2012 से 2015 तक 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिया था, लेकिन बैंक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया.
विजय माल्या ने पॉडकास्ट में अपने किंगफिशर एम्प्लॉय से माफ़ी भी मांगी। उनका करियर, उनका फ्यूचर, सब कुछ इफेक्ट हुआ। मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। ये मोमेंट पॉडकास्ट का सबसे इमोशनल पार्ट था। पॉडकास्ट में माल्या ने ये भी बताया कि वो स्पिरिचुअल है। मैंने साउथ इंडिया के कई मंदिरों में सोना डोनेट किया है। मुझे पूरा विश्वास है भगवान मेरी रक्षा ज़रूर करेंगे। पॉडकास्ट के बाद सोशल मीडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कुछ लोगों ने कहा एटलीस्ट उसने सच कहा, कुछ लोगों ने कहा ये इमेज सुधारने का नाटक था। एक कॉमेडियन का स्पूफ वायरल हो गया जिसमें बोला गया पैसे तो हमें उसे उल्टा वापस देने चाहिए। तो क्या विजय माल्या एक फाइनेंशियल क्रिमिनल है या एक बिजनेसमैन जिसे सिस्टम ने समझने का मौका नहीं दिया? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। To everyone for the failure of Kingfisher Airlines.